Excuse me. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आज यू कैन सी कि यहाँ पे ज़ाबिस्ट कैरियर फेयर 2023 लगा है। आजकल के यंग एंड इमर्जिंग टैलेंट्स को देख के आपको कैसा फील हो रहा है? इट इज एक्चुअली वेरी इफेक्टिव, वेरी परफेक्ट। मैं परफेक्ट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इधर जो काम हो रहा है और जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं ज़ाबिस्ट में, यही स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, व्हिच हैज टू बी फॉलोड। ये बेसिकली स्टूडेंट्स को पहले से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि ये उस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके दे कैन फेस द वर्ल्ड इजीली, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ इसी तरीके का स्टैंडर्ड या इसी तरीके के स्टैंडर्ड पे बाकी सब इदारों को भी काम करना चाहिए और बच्चों को, यूथ को हमारी चांसेस देने चाहिए, रास्ता देना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके, कारोबार में लग सके, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जा सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके। इसी तरीके का काम मेरे हिसाब से सारे इदारों को करना चाहिए। यही बेसिक और यही तरीका है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया, देयर इज नथिंग लाइक आइडियलिज्म। इसमें फर्दर बेहतरी की जरूरत है। आइडियलिज्म कोई नहीं है, लेकिन इसमें और चीजें बेहतर की जाए जिसमें फर्दर इदारों को लेके आया जाए। मेरे ख्याल से कुछ गवर्नमेंट के भी इदारे इसमें होने चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कुछ आईटी के इदारे भी होने चाहिए और इसमें एक स्टार्टअप का भी मेरे ख्याल से एक आई डोंट नो जगह होनी चाहिए जहाँ ये बच्चे जो ना अपने स्टार्टअप से रिलेटेड अपने प्लान्स लेके आ सके और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज शेयर कर सके, तो उस पर भी काम होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मैं ज़ाबिस्ट की मैनेजमेंट को, डीन्स को, रेक्टर को, सबको मुबारकबाद देता हूँ। बच्चों को they are doing good job and they are doing very effective job, or I'm amazed, I'm happy to see this kind of environment. This is the basic requirement of the nation right now. Very well sir, thank you so much sir. Thank you Sir, how are you? I'm fine. How about you? Alhamdulillah. Well, sir, as you can see, this is SZABIST Career Fair 2023. How do you feel about this? Oh, it's always as usual wonderful, because I've been here for last 7 years and I've been looking this event, following this event for last 7 years, and I've seen many good organizations like this time we've got Aga Khan University, Chase Value or Gatti Tech. They all the time they come and I've seen our graduates and our students, they're working there and they get opportunity to showcase their talent and get opportunity to be employed before they finish their degree from us. Thank you very much sir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़ाबिस्ट कैरियर फेयर 2023 है, ये एनुअल है, हर साल होता है। आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वैसे बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं, अभी तो जस्ट मैं आया हूँ, लेकिन आई विल सी के कितनी कितनी कंपनीज और क्या क्या मतलब यहाँ पे है। सही, तो आपको मतलब इनमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? यस, होगी, जाहिर सी बात है, इतनी सारी कंपनियां हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट भी है, लेकिन जो मतलब एक्सपीरियंस या जिसको वो होगी कि वो जॉब वगैरह करे, तो ऐसा बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे ये जॉब फेयर वगैरह होता है, तो बहुत अच्छी बात है। सही, वेरी वेल सर, थैंक यू। Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. How are you? I am pretty good. Sir, as you can see, this is SZABIST Career Fair 2023. It happens annually. How do you feel about this? I feel elated that so many companies have actually come to SZABIST. FMCGs, local, international companies, banks, and they're actually giving a good opportunity to our students from different departments who are here. So it's a good sight to see so many students coming and talking to these people and actually getting opportunities in these hard times. Very well sir, thank you sir. Assalamu alaikum sir. How are you? I'm good. So as you can see, this is SZABIST Career Fair 2023. It happens annually. So how do you feel about this? It's a great event. It's an annual event, and we have
this as an opportunity for the students and the alumni, especially the final year students, to come here and get to know the companies. Big brand names come here and they give an opportunity for the students for networking as well as job opportunities. So as you can see, our very young and emerging talents, would you want to give them, a slight, some sort of feedback or to our young and emerging talents, maybe a tip? The students who should be coming in here today should come with their updated CVs, their portfolios. A skill set should be in their mind which matches with the company's opportunities. One thing which they have to make sure is when they are coming here, they should research the companies. Now what we have done here is on social media we have mentioned the names of the companies who are participating. Around 80 plus companies are going to come here in these 2 days. So the students should research the companies on their website and get to know about the company's history, mission, values, so that they can match their skills with it. Thank you. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. How are you? I'm good. As you can see, the SZABIST Career Fair 2023, it happens annually. How do you feel about this? I feel great. I feel it's a great opportunity for everyone, especially the students who are graduating or are in their third year. So basically, would you want to give some advice to your fellow student friends? I feel like it's everyone should visit it because it's a great opportunity. We have a variety of companies over here visiting us, so you should sign up for their opportunities. Yeah. Do you see potential in these companies, any of your companies? Yeah, I feel like there's a variety of companies catering to all the fields, especially media. I would say because I am belonging to media. I see Group M, which is a great opportunity. Last year we had limited companies, but this year we had 83 companies. That's a huge chunk. Yeah, mashallah sir. Yeah. So what are your majors? Advertisement. Did you find, so far, did you find any company of your interest? Yeah, Group M. Yeah. All right. Good luck with that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? Very well. What's your good name? Tanisha. Okay, Tanisha. So, SZABIST Career Fair happens annually. How do you feel about this? I think it's a great opportunity for we young people to get involved in and choose a company of our interest. So I feel it is a very good opportunity to excel your skills or excel the abilities that you have. Right. So, what are your majors? Actually, I'm in third year right now, but I'll be majoring in the HR department, the human resource. That's very good. So, do you find opportunity or any company of your interest among these companies? Yeah, L'Oreal is a company of my interest because I do follow it a lot. I use its products, and it's here right now. So I feel that is one of the company of my interest. So yeah. Right. So, would you want to give a little advice to your fellow students? Yeah, I would just want to say that just come and just see if you find anything good out here. If you find a company of your interest and apply for it, you never know, you might get your dream job. Very well said. Thank you so much. Thank you so much. Okay, have a good day. Okay. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ अभी मिस बर्निस जोसेफ हैं from Mystic Company, and she is the HR manager over there. Now, without further ado, we would like to interview her. Okay. Hi, how are you? Hi. Very well, how are you? Okay, so would you want to give us a little brief introduction of the company? Yeah, great. I would like to do that. Okay, so Mystic Advertising is a UAE-based marketing and advertising agency. We have been in this industry now roughly for 11 years, all right? So we cater majorly to UAE brands. 90% of our brands are from UAE and only 10% are local Pakistani brands. We have a head office in Dubai and we have a back office in Defence Base 8. And in terms of marketing and advertising, we have everything. So you name it and we have it. We have social media management, we have content creation, PR, events, everything. So that's a little bit about Mystic Advertising. Okay, thank you. Well, do you see potential in the market right now, the market of SZABIST? Oh yes, a lot. We have really good resources over here. I enjoyed speaking to the students. Everybody is very friendly, positive, and I certainly think I'll be taking a few of them on board. Okay, very well. Looking forward to being there. Okay, inshallah. Thank you. Assalamu alaikum Nazreem. I am here with L'Oreal and we have Ubaid here and we will be asking him further about the company. Ubaid, would you want to please give us a little brief introduction of the company? So L'Oreal is a very well-known brand. Right? I don't need to give more details. We are a beauty-centric organization. We work making sure that we give the beauty that moves this world around.
All right. So, do you see potential in this market? Yeah, obviously. So I'm a SZABIST student too, so I understand that, and this is great. It's always good to come back to university and have the experience. So I see a lot of good students coming in. We have a Brandstorm project through which you can get into L'Oreal. That is the only way to get into L'Oreal if you're starting a position. Either it's an internship, management training, or a project training position. Right. So, what are the opportunities that you are providing to the students of SZABIST? So currently we have, so through this Brandstorm, you can make sure that you get as a pepinier, or you get as a management trainee, or you get as an intern, or you can be hired as a project trainee as well. All right. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मारिया हसन। राइट, मारिया। सो मारिया, जैसे कि आप देख सकती हैं कि जब कैरियर फेयर 2023 ये एनुअली होता है, आपको इसके बारे में कैसा लग रहा है? इट्स ग्रेट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट होंगी थर्ड ईयर की, सो इट्स ग्रेट फॉर अस। अच्छा, आपके मेजर्स क्या हैं? मार्केटिंग। राइट, तो आपको अपने मेजर के हिसाब से यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग फर्म नजर आई है सो फार? यस, मिस्टेक एडवर्टाइजिंग है, ग्रुप एम है, और बाकी कंपनीज की भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। होप टू सी यू इन वन ऑफ दोज फर्म्स। यस, थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum Nazreen. So we are here with ERP group of companies, and here we have Mr. Farhan Ahmed. He is the director of operations. Without further ado, I would like to interview him. Mr. Farhan, would you like to give us a little brief intro of your company? Basically, our company is a group of companies with four different domains. We are doing staffing in the US. We do also have ERP college in Canada with 8 different campuses, and we also do have consulting. We are an implementation partner of SAP ERP and Microsoft Dynamics and Salesforce. So we provide consulting services on the globe. Right. So do you see opportunity in the market of SZABIST? Yeah, of course, we also have received a couple of good CVs, especially for interns and for job as well, and we are looking for more in this way. Right. So what are the opportunities that you're providing to the students of SZABIST? Basically, we have in finance department, not too much, but in web department, social media department, especially we are looking for this telesales department or the recruitment, but these are short at this time. Very well, sir. Thank you so much. All right. Assalamu alaikum, Nazreen. We're here with Alkaram Studio, and we have Mr. Munib over here. He's the digital marketing manager. And without further ado, I would like to interview him. Mr. Munib, would you want to give us a little brief interview about the company? Alkaram Studio is a fashion apparel brand. It's a legacy brand with over like 40 years of classic footprint of around 100 plus stores Pakistan, and we're dealing internationally. Also, we ship internationally. We have our own brand presence, and it's like one of the top 5 brands of the fashion apparel industry. We offer a wide range of clothing, unstitched, ready to wear, a man, and yes, we have jumped into athleisure also and Mac West too. So we have a wide collections, and soon we are going to be launching something huge. So yeah, that's it. Inshallah, looking forward to see that. Acha, Munib, do you see opportunity in the market of SZABIST? I'm also a grad of SZABIST. I've done my bachelor's and master's from SZABIST. That is why one of the reasons I'm here. One more reason is that SZABIST people are really qualified, and they have a market presence and a sense of responsibility. I believe the culture and the environment they have been in, they are very flexible in every aspect of their lives. So my first approach is always to hire SZABIST people, because I can mold them in whatever shape I want, because these are the raw material for corporate world, and they are ready to be molded however they want to be. So yeah, SZABIST people have potential. Right. So what opportunities are you providing? Currently we are providing internships and MTA programs for summer this year. So yes, we are looking for a lot of resumes, and we will be opening a lot of positions, plus lateral hirings are open right now at Alkaram Studio. So SZABIST people are welcome. Thank you so much. Assalamu alaikum, Nazreen. We're here with Echo Digital, and we have here Miss Serish. Hi Serish. So could please let me know your designation? I am Assistant Manager HR in Echo Digital. Right. So Serish, would you want to give me a little brief introduction of the company? Sure. Actually, we are a digital marketing agency. It's an advertising agency. Basically, we operate in Pakistan as well as internationally. We're expanding. We have been existing since more than 10 years now. We have rebranded ourselves just last year,
Is there anything else you'd like to know? Do you see potential in the market of SZABIST? Yes, I do. I do. But interview is just a stepping stone, and that's the reason HR has probation period. So you get an insight of the candidate. Right. So, what opportunities are you providing to the market of SZABIST? It's creative, it's client service, it's web development as well, where we excel in WordPress, Shopify. There is UI UX designing, there is graphic designing, animation, and we give people chance who want to learn if they are completely fresh. Right. Thank you so much. Assalamualaikum, people. We're here with Siddiq Sons, and we have here Mr. Ubaid. Right. So, Mr. Ubaid, would you wanna? What's your designation? I'm Group Manager HR in Siddiq Sons Group. Right. So, would you want to give us a little brief introduction about the company? Yeah, basically we have a group of companies. We have a different business in Pakistan: textile, plate, real estate, and we are also in construction side. So basically, it's a formal introduction of my company. Right. So, do you see potential in the market of SZABIST? Yeah, it's good and it's we are looking for some fresh graduates and some experienced guys in accounts and finance and different disciplinary industries. Right. So, what opportunities are you providing to the students of SZABIST? I already told you that we are approaching them from accounts and in supply chain department in different opportunities. Right. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. I'm good. All right. So, what's your good name? Huria. Right, Huria, as you can see, SZABIST Career Fair happens annually, and this is SZABIST Career Fair 2023. How do you feel about this? I feel good about this. This is the second time I'm attending this festival or fest thingy, and I think it's really good for the students. Right. So, what are your majors? Media sciences. Right. So, Advertising. right. So, do you see any company of your interest over here? Yes, I can see Group M and EBM. It also manages brands and all, and I think they are like the most wanted companies right now for the students. So it's a very good opportunity for us to like go and apply stuff. Do you think like career fairs like so should happen? So it should keep continuing to happen? Yes, they should. They must, because students को apply तो करना ही है कहीं ना कहीं friendships वगैरह के लिए. So why not उनको opportunities खुद ही यहाँ within the university मिल जाए, and also अच्छी उनको पता भी हो, maybe from the seniors and from the teachers जो recommended हो. So it will be like good for them. Very well said. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum, people. We're here with Dal Foundation. Assalamu alaikum. So, what's your name? Mahakalam. What's your designation? So I'm working as a senior executive corporate comms and employer branding. All right, ma'am. So, as you can see, there are a lot of potential students over here. Do you see do you see potential in the market of SZABIST? Yeah, obviously we do have SZABIST graduates at the TDF who are working in the HR domain as well as in PR and communications domain. So we do see a lot of potential graduates we'd be hiring from SZABIST, inshallah. Inshallah. So would you want to maybe give us a little brief introduction about the company? Okay, so we are an NGO that's more focused towards education-based initiatives. We started off with more formal education-based initiatives, which is the Darjeeling University, KSBL, or Dal Public School, and now we're more focused towards informal ways of promoting education. If you know of the TDF Ghar, that promotes the culture of Karachi, art, history, and aside from that, the most recent initiative that we have is the TDF Magnifi Science Center. So that we're trying to promote STEM-based education within Pakistan, which is kind of missing, and a lot of people don't go towards the science subject. That's our focus now. Right. So what opportunities are you providing? Okay, so we obviously, since we have a lot of projects within and we have a huge network, so we take people from different domains. So it could be HR, it could be marketing, it could be engineering-based people as well. So IT, we take people from all sorts of backgrounds. So we don't obviously limit any of the graduates that are coming in. That's very diverse and very well said. Thank you so much. Thank you. It's nice having you guys around. Assalamu alaikum, everyone. We have here Miss Haja Arif. She is heading the Executive Development Center of SZABIST Karachi campus, and her main task is to basically provide opportunity to the young grads. So without further ado, we would like to interview her. Hello, Miss. How are you? Hello, how are you? I'm good.
Very well. How are you? So, SZABIST Career Fair 2023. How do you feel about it? I'm really feeling great about it because I have really worked hard for this event. Today, around 76 companies are participating in the career fair, so I'm really passionate about it and hoping for the best that the students will get opportunity from all these companies. Right. I can see there are a lot of students here working hard. Do you see that the students of our SZABIST are pretentious? Definitely, yes. That's what I have seen in last many years working at the SZABIST. Students have definitely very good potential in every sector, and as you know, we have so many specializations. So, if we talk about management sciences, the students are very passionate and they are very good in their skill. Also, regarding the computer sciences department, engineering, but all students are different from each other, and I definitely know that they have the potentials. Right. Would we be seeing more of career fairs happening in the further coming years? Yeah, definitely. From last years, this career fair is much better because the companies are more in number. So we are hoping best for the next more years to come, and more students to come for the career fair. So this is what I have to say. Inshallah, hoping to see this happen every single year. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो हम मौजूद हैं कैरियर फेयर 2023 पे विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ईडीसी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर एंड हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर यूशा हु इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्टूडेंट काउंसिल। आइए इनसे बात करते हैं कैरियर फेयर के हवाले से और काउंसिल का आज क्या रोल है। अस्सलाम वालेकुम यूशा। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड एज वेल। तो यूशा बताएं थोड़ा सा आज कैसा दिन गुजरा है कैरियर फेयर के हवाले से, स्टूडेंट्स का आना जाना रुझान किस तरह का है, स्टॉल्स किस तरह के मौजूद हैं और क्या क्या यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है स्टूडेंट्स को? बेसिकली हम स्टूडेंट काउंसिल तो हर इवेंट में होता ही है, हमारे ड्यूटीज लगती हैं, डिफरेंट ड्यूटीज असाइन होती हैं स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को। तो आज हमारा ये था रोल कि हमारी रजिस्ट्रेशन डेस्क लगी हुई है, इस पर हम लोग जो एंटर हो रहे हैं यहाँ पे करियर फेयर के लिए तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, आके अपने डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब लिखेंगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, फिर एंटर होंगे यहाँ पे आके। तो बेसिकली यहाँ पे स्टॉल्स यहाँ भी लगे 100 कैंपस में भी हैं और 154 कैंपस में भी लगे हुए हैं। तो डिफरेंट कंपनीज हैं, आज और कल दोनों दिन है करियर फेयर, तो दोनों दिन अलग अलग कंपनीज आएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है और एल्यूमिनाइज को अलाउ किया जा रहा है, उसके अलावा बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी आके विजिट कर सकते हैं स्टॉल्स को? दूसरे जूनियर्स भी आके विजिट कर रहे हैं क्योंकि इंटर्नशिप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कुछ कंपनीज, तो इंटर्नशिप के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर द जूनियर्स। बाकी सीनियर्स के लिए तो जॉब ओपनिंग्स भी हैं, उनके लिए भी इंटर्नशिप्स हैं सीनियर्स के लिए, लेकिन सब आ रहे हैं यहाँ पे। चलें ठीक है, थैंक यू यूशा। यू वेलकम। सो व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टूडेंट, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. What is your name and which program do you belong from? So I'm Bushra Faim and I belong to BS Biotechnology final year. फाइनल ईयर। ओके, सो बुशरा आपको करियर फेयर कैसा लग रहा है? व्हाट इज योर व्यू? यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है स्टूडेंट्स के लिए या डू यू थिंक इट इज ड्राई? Yeah, so career fair is very good. There are very opportunities for especially for BBA students, and for biotechnology students there are also some opportunities. But I think that there should be more pharmaceuticals companies should be here for our internship programs or for our job. So are there any multinational companies over here related to your field या सिर्फ local companies आए हैं? No, there are 2 multinational companies like Hydrogen is also and Hudson Pharma is also, but I guess there should be more related to our field. So do you think that you can work in Pakistan after your bachelor's या do you think you should move out for your master's and वहाँ पे आप internship करें या job pursue करें? No, there are also some opportunities. We can work in Pakistan, but if we do not avail this opportunity, then we can think to go outside. Okay, thank you. Thank you. So we have someone here who is also an alumni of SZABIST and who is representing Habib Metro at the career fair. आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I am good. How are you? I am fine, thank you. So, Mr. Ahmed, what are your views on SZABIST की जो students हैं जो आज यहाँ पे आए हैं? Do you think you are getting good entries? किस तरह का आपको feedback मिल रहा है यहाँ पे? माशाल्लाह से लास्ट टाइम से रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे एक आइडिया है, नॉलेज है जॉब फेयर्स की, और इस टाइम बहुत माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड साइड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जितने भी लोग थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। कुछ स्टूडेंट्स थे वो ऑब्वियसली कुछ फ्रेश थे और मोस्टली जो थे वो एक्सपीरियंस भी है।
तो ऑब्वियसली एक बैंकिंग सेक्टर में हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी फुलफिल हो रही थी. सो इट्स अ बेनिफिशियल फॉर अस और आप लोगों के लिए भी कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ही यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. So it's a win-win situation for us. So what is Habib Metro looking for? Like उनका डोमेन जो है सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड है या आर दे टेकिंग इन IT स्टूडेंट्स एज वेल एंड अदर्स? बेसिकली बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं. हमारे पास HR भी होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डिफरेंट डोमेन्स भी होते हैं. इसमें हमारे पास FI आ जाता है, रिस्क आ जाता है, क्रेडिट एनालिसिस वगैरह आ जाता है. इसके अलावा हमारे पास IT का भी बहुत मेजर रोल होता है जिसमें हमारे पास वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, साइबर सिक्योरिटी जो इम्पोर्टेंट इशू होता है पाकिस्तान में, उसको भी लुक आफ्टर हम लोग कर रहे होते हैं. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फाइनेंस के स्टूडेंट चाहिए, हमें IT के भी चाहिए होता है, वेंडर मैनेजमेंट के लिए, सप्लाई चेन के लिए भी स्टूडेंट चाहिए होता है. ओके, सो गुड लक टू यू मिस्टर अहमद. चला, थैंक यू सो मच. थैंक यू. So viewers, we are here present at Marriott Hotels stall. आइए उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज योर नेम? Walaikum Assalam, I'm Mary. I'm working as Director HR here at Karachi Marriott. Okay, so how is your opinion या आपको किस तरह का यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है, किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं? Do you think that you are able to find what you are looking for? The event is actually very well organized, and we came here with the expectation of finding young raw talent for our internship programs, MTO programs, and we have actually found quite a few people who meet our criteria and are pertinent to the positions that we are having in our hotel. Okay, so what kind of domains is Marriott looking for? For example, IT, finance, and etc. etc. या is it diverse या वो किसी एक से दो फील्ड्स तक ही महदूद है? नहीं, एक से दो फील्ड्स तक महदूद नहीं है. वी हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव पोजीशंस इन IT, HR, फाइनेंस, सप्लाई चेन, आल्सो टुवर्ड्स फ्रंट ऑफिस साइड. या एंड विल द एम्प्लॉइज जो स्टूडेंट्स आपके कंपनी का हिस्सा बनते हैं, होटल का हिस्सा बनता है, विल दे बी गोइंग टू द अदर, फॉर एग्जांपल विल दे बी गोइंग टू इस्लामाबाद एज वेल, या वो सिर्फ कराची के लिए ही रिक्रूटमेंट हो रही है? नहीं, we do have internal growth opportunities with us. So for example, if any position comes up in any of hotels that are under our group, so we prefer to grow employees internally. So that position is advertised internally first, then we advertise the position outside. Okay, thank you so much and best of luck to you. Thank you so much. So viewers, यहाँ पे हम मौजूद हैं एक और स्टूडेंट के साथ, आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. What is your name and which program are you from? मेरा नाम मोहम्मद माजुद्दीन है, currently in PABS in 6th semester. ठीक है, तो मिस्टर माजुद्दीन, आपको किस तरह का लग रहा है ये जो ऑर्गेनाइज किया गया कैरियर फेयर ADC की तरफ से? क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्टिव होगा, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है फॉर एन इंटर्नशिप? जी बिल्कुल, इट्स वेरी गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट. इनफैक्ट अभी जो है काफी जगहों पे मैंने अप्लाई वगैरह किया है और तीन चार तो काफी इंटरेस्टेड थे मुझे रखने के लिए फॉर कंटेंट राइटिंग एज वेल एंड फॉर HR एज वेल. सो इट वाज ग्रेट. कंटेंट राइटिंग की बात की आपने, आपको एक्सपीरियंस है कंटेंट राइटिंग का? जी बिल्कुल, मैं इनफैक्ट एक राइटर भी हूँ, तो एक 5-6 जगहों पे मेरी पब्लिकेशंस भी आ चुकी हैं एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट एज वेल. तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? आप इंटर्नशिप या जॉब्स के बाद, फॉर एग्जांपल बैचलर्स कंप्लीट हो जाता है, आप डायरेक्ट जॉब पे जाएंगे या मास्टर्स के हवाले से भी कुछ प्लान किया? बिल्कुल, मैं इरादा है कि मास्टर्स भी करना है लेकिन साथ में जॉब वगैरह भी करनी है, तो इंशाल्लाह ये प्लान है मेरा. यूजुअली जो बैब्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं, तो आपका प्लान है या आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? फिलहाल प्लान तो है, लेकिन जहाँ मतलब अभी फिलहाल तो जहाँ अप्लाई करना हर जगह अप्लाई करूंगा और मास्टर्स के लिए भी, फिर जहाँ होता है फिर. ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू मास. थैंक यू वेरी मच. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है एक और स्टूडेंट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. So Mr. Ammar, जैसा कि हम सब जानते हैं कि you are now in your 8th semester of computer science, तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं हमारी फील्ड से रिलेटेड या? बहुत अच्छी है ये अपॉर्चुनिटी और आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी अच्छी कंपनीज और बड़ी कंपनीज आएंगे. काफी सीरीज जो है वो उनके पास जमा हो भी गई है, मैं देखा था स्टॉल्स पे, और जहाँ जहाँ मुझे भी अपॉर्चुनिटी नजर आई है तो मैंने वहाँ पे फिजिकली भी दी है और ऑनलाइन भी सबमिट कराई है CV. ऑन स्पॉट इंटरव्यूज हो रहे हैं या बाद में बुलाया जा रहा है स्टूडेंट्स को? अभी फिलहाल मेरे नजर से तो ऑन स्पॉट नहीं गुजरा है, लेकिन कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि ऑन स्पॉट भी हुआ है, क्योंकि कुछ प्रिपरेशंस लोग कर रहे थे अपने लिए, तो मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा शायद. तो हमारा आपने क्या सोचा हुआ है? आप मास्टर्स के लिए भी कुछ सोचेंगे, अप्लाई करेंगे, या पहले आप जॉब करना चाहते हैं? अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में ही सोचा है लोकली या आप अब्रॉड जाएंगे? वैसे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस तो अभी यही है कि जॉब करूं, और पाकिस्तान में मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर UAE साइड में मिल जाती है तो तब भी वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने डेटा साइंस की तरफ जाने का सोचा हुआ है. तो पाकिस्तान में डेटा का भी इतना रुझान नहीं है जितना बाहर की तरफ है,
सो विल लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटी, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वरना फिर यहीं पे कुछ कंपनीज मैंने दिमाग में सोची हुई है और अभी अप्लाई भी किया है मैंने कुछ कंपनीज में, तो कुछ बैंक्स में, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू अमर। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर इमाद लारी, हु इज आल्सो इन हिज लास्ट सेमेस्टर ऑफ मैकेट्रॉनिक्स, जो कि हम सब जानते हैं एक बहुत डिफिकल्ट फील्ड होती है। तो इमाद, आपको कैसा लग रहा है, आपका ओपिनियन क्या है इस कैरियर फेयर के हवाले से? ये कैरियर फेयर जो है अकॉर्डिंग टू मी ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि बंदा जो है वो अपने लास्ट सेमेस्टर में आके हो रहा होता है कि हम कहाँ अप्लाई करें, क्या करें, वो अपने सीवी से ही कर रहा होता है सारी चीज़ें, ही और शी इज़ रियली कंफ्यूज। तो उनका ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में करियर फेयर होता है, तो बेसिकली एक अच्छा पाथवे, इजी पाथवे इनके लिए बन जाता है कि लोग अपने सीवीज देते हैं और उनको कॉल्स वगैरह रिक्रूटमेंट में उनको हेल्प हो जाए। तो क्या प्रोग्राम है, यानी कि अगर ग्रेजुएशन हो जाती है तो उसके बाद आपने यहीं पे कहीं जॉब करनी है या अब्रॉड शिफ्ट होना है, उस हवाले से कोई मल्टीनेशनल कंपनी आपकी नज़र में यहाँ पर है? देखिए, कंपनीज वगैरह तो यहाँ पे बहुत हैं, लेकिन बात वही है कि आजकल जो चल रहा है पूरे इन्फ्लेशन का ज़माना है, तो अगर तो जॉब मुझे मिल जाती है जो मेरे डिग्री से रिलेटेड है तो वेल एंड गुड, आई माइट ट्राई, लेकिन प्लान ये है कि मैं बाहर जाऊं, बाहर से कुछ करूं। बट अगेन, अगर मुझे कोई अच्छी कंपनी से जॉब मिल जाती है एंड आई एम गेटिंग अ गुड पे वगैरह, तो फिर आई माइट। तो सीएस या मेका की फील्ड से रिलेटेड आज ही कंपनीज आई हैं या कल के दिन भी आएंगी? बेसिकली सीएस और मेका की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखें तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनीज बहुत मिलेंगी, लेकिन यूजुअली हर साल ये होता है, मैं 2019 से यहाँ पे हूँ, मैं हर साल लिखता आ रहा हूँ कि सीएस और मेका इंजीनियरिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंपनीज इतनी नहीं होती। तो ये है कि उनके लिए थोड़ा सा इनको चाहिए कि और मजीद काम करें और मजीद कंपनी को अप्रोच करें। Okay, best of luck to you, Imad. Thank you. So viewers, we are here with Group M and a representative of theirs, and we'll ask her name and which domain is she from and what is Group M about. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Rabia Numan. I am Assistant Manager Talent Acquisition. I am in HR. So I'm mainly looking after recruitment and employer branding at Group. Okay, so what is Group M about? Group M is basically a multinational media house. ठीक है, so Group M एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंडर जो है वो 5 एजेंसीज आती हैं। हमारे पास 5 एजेंसीज इसलिए हैं because we have very similar brands, like we have Al-Karam and we have Hardy. Since they are all similar brands, they can't be in the same agency क्योंकि conflict आ जाता है. So we have different agencies to cater to all the 200+ brands that we have, जिनकी हम media planning and media buying करते हैं। So what is your view as a representative of Group M? कैसा है ये career fair? Do you think you are getting what you were looking for? इस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं? Definitely, I'll tell you something. हमारे बहुत सारे I think we have around 40% people from SZABIST only, क्योंकि यहाँ पे media sciences की degree offer होती है and a lot of people come here. I'm not entirely sure if you are aware about Aga Zohaib. Aga Zohaib is one of our managing director. He's heading Mindshare. He's an alumni here, and he does offer a course here as well. So people do study from him, and एक interest peak हो जाता है about Group M. So we are getting the right response because there are a lot of marketing and media students. So I think it's great. It's great advice. Okay, so the kind of employees or internees that you are looking for, are they diverse या वो किसी एक दो फील्ड से belong करते हैं? For example, finance या HR के बंदे आप ढूंढ रहे हैं, या IT भी आती है and all of the other fields as well. To be fair, I think हम HR और finance में बहुत rarely hiring करते हैं. हमारी ज़्यादातर hiring जो है ना वो media planning, media buying और digital media planning में होती है. So we look for students who have a marketing or a media background. Again, it's okay. As an HR person, I can tell you this. मेरी पहली नज़र अगर CV पे जा रही है, I'll always look at your experience. कि अगर इस बंदे का marketing या media में कोई experience है, and then I'll look at your degree because your experience is way more relevant than your degree. Okay. Thank you so much. No worries. Thank you. So viewers, हम मौजूद हैं यहाँ पे with the representatives of आगा खान यूनिवर्सिटी. आइए उनसे बात करते हैं, उनके स्टॉल के हवाले से उनसे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. What are your names? वालेकुम सलाम. मेरा नाम इरफान मंचर है, मैनेजर टैलेंट एक्विजिशन. I'm Afida Sohail. I'm talent acquisition specialist in the research team. Okay, so what is your point of view? कैसा है ये ऑर्गेनाइज किया गया जो फेयर है पूरा, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वो मिल रहे हैं? Did you find what you were looking for?
Well, actually, first off, this is a great opportunity for you students that you are doing, the kind of platform that you are providing for you students to kind of get that exposure that they might not get if they had gone outside in the market. So that's an excellent initiatives by a number of different universities, but as far as re-attending its SZABIST, it's excellent. Talking about the facilities, I guess the facilities are amazing. The hospitality is excellent. Coming back to your original question as to whether we were able to kind of find the right kind of talent that we were looking for, certainly yes. I think उनका जो inclination is more towards the training programs that I think different universities and our university also needs to think about whether we can come up with good programs that can give them good exposure and kind of lay down a good platform for them to kind of start off their career. Okay, so is Aga Khan University looking for a certain type of domain उनके students को, या is it diversified? For example, IT से related students ढूंढ रहे हैं या HR, finance, इस हवाले से थोड़ा सा बात. For me, because I'm hiring for research right now, so I'm looking for candidates coming from public health, bioinformatics, biomedical. So these programs are my target areas. So do you think that the students जो यहाँ पे biotechnology के students हैं, were they good enough for what you were looking for? Yes, they are. Definitely, they have the basis to start their career now, and they need a couple of years of experience, and then they can, move ahead. Okay, thank you so much, guys. Thank you for having us. So guys, we are here at the stall of Mizan Bank, and with the representatives that are over here, we'll talk to them about what are their views on today's society fair. Assalamu alaikum. What are your names and which department are you from? My name is Bisma Hanif. I'm Relationship Manager in Mizan Bank Head Office. Assalamu alaikum. My name is Azhar Ahmed. I am here leading a team of Talent South in HR department. Okay, so sir and ma'am, were you able to find the students you were looking for? The response is overwhelming. We enjoyed a lot कि जिस तरीके से different dreams के साथ बच्चे आ रहे थे और inquire कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा मेरा. And sir, is the domain that you are looking for, is it diversified या किसी एक particular domain को target कर रहे हैं? For example, आप IT को target कर रहे हैं या साथ साथ HR, finance, इन सारी चीजों? So basically, we are looking for the retail banking side, जिसमें हमारी ब्रांच बैंकिंग हो जाती है बैंकिंग की, बट यहाँ पे आके स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जान के और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट देख के हमें ये एहसास हुआ कि वो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड वैसे ही थे और दे आर वेरी ओपन टू वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एज वेल. तो हमें बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स लगा कि हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कलेक्ट कर सकें हम लोग. ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू. सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एलुमनाई मिस्टर अहमद नईम. आज वो भी आए हुए हैं इस सोसाइटी फेयर पे. उनसे बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके. अस्सलाम वालेकुम अहमद. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो अहमद, आपके ग्रेजुएटिंग, आप दोबारा सोसाइटी फेयर में आए हैं ज़ाबिस्ट के, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? क्या ये पिछले साल वाले सोसाइटी फेयर की तरह ही है? इज इट अप टू द मार्क या उससे बेहतर है? I think this time it's up to the mark and it's way better than last time because काफ़ी opportunities है, प्रोसीजर काफ़ी अच्छा कर दिया है और इन्होंने मतलब इस बार डिफरेंट कंपनीज और ज़्यादा बेहतर कंपनीज आई है, तो most probably ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ज़ाबिस्ट. सो एज ए ग्रेजुएट आपको एक्सपीरियंस होगा, क्या आपको ऐसा लगता है आपकी नज़र में कि सोसाइटी फेयर से या कैरियर फेयर से इन सब चीज़ों से कुछ फर्क पड़ता है स्टूडेंट के पोर्टफोलियो पे या उनको एक्सपोजर मिलता है मार्केट का? बिल्कुल फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो है असल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो बिजनेस बैकग्राउंड से है या दे आर मच अवेयर अबाउट डिफरेंट कंपनीज व्हिच एग्जिस्ट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. तो इससे एक्सपोजर मिलता है कि हाँ भाई ये लोग भी एग्जिस्ट करते हैं. दे हैव द जॉब्स which these students are actually looking for, whether it be in pharmaceutical company, whether it be for a student of a business student, for biotechnology student, or for accounting and finance, banking वगैरह, marketing. तकरीबन आपको यहाँ पे लॉजिस्टिक्स वाले हर कोई मिलेगा. ओके, थैंक यू सो मच अहमद. व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक स्टूडेंट. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. सर, व्हाट इज योर नेम एंड आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं? My name is Mustafa and I'm currently doing BBA in SZABIST only and this is my last semester. ओके, दिस इज योर लास्ट सेमेस्टर. ओके, तो आपको कैसा लग रहा है कैरियर फेयर में आके? डू यू थिंक इट इज अप टू द मार्क? आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है जो आपने सोचा था? और कंपनीज कैसी लगी? आपने अप्लाई किया आज? It's good, it's really good because मैं खुद अपने फादर के साथ एक HR कंसल्टेंसी हमारी है, तो we also go to various platforms for these recruitment and all. और एक बड़ा अच्छा environment create किया हुआ है because everybody is looking forward for internships right now because internships और MTO programs
because they want to build their career, and career fair is all about that. So it's really good. So, do you think that after your internship or job, will you apply for masters as well? Are you planning on moving abroad या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं? Here, right now, I'm really confused about it because you know the current scenario that has been built. So maybe I might go out and maybe I might do MBA from here only. But it depends on the situation. मतलब अगर मुल्क में कुछ बेहतरी नजर आ रही हो तो ऑब्वियसली आप भी यहीं जा रहने का सोचिए, मैं भी सोचूं, लेकिन नजर नहीं आ रही, अभी नजर नहीं आ रही. Okay, best of luck to you. Thank you so much. Thank you. So viewers, we are over here at the stall of Nixer College. आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Ma'am, what is your name and which department from Nixer do you belong from? Okay, so I'm representing Nixer College and I work here as HR manager. Yeah. Okay, and what is Nixer College looking for from the university students? Okay, so we are looking for fresh graduates who can apply as in the student affairs department, counseling, university placements, finance, HR, marketing, data management. So these are the openings. These are the departments which have openings. Are you guys looking for teachers as well? Yes, we do have for openings in the faculty area as well, but for that we require a bit of experience. Okay, so do you think that you were able to find some students that are up to the mark जो Nixer के criteria को meet करते हैं आज? Absolutely, I actually have shortlisted around like 10 individuals and would definitely call them, and I'm even looking for both, maybe better profiles to see in my inbox. Okay, and do you think that you guys will be coming tomorrow as well? Yeah, this is the only day you guys are over here. Okay, so I think the companies were split into 2 days, and today was the day which was given to Nixer, so I won't be coming tomorrow. Do you have high hopes from the students of SZABIST? Oh, definitely, yes. Okay, thank you so much for your time. Thank you. Viewers, हम मौजूद हैं ब्रेक थ्रू के स्टॉल पे. आइए उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. What are your names and which department from this company do you belong from? Walaikum salam. My name is Sayyid Saleh and I am working as an HR executive here. Hi, my name is Paras. I work as assistant manager in HR. Okay, so were you guys able to find the students you were looking for in trainees या job दोनों में से? You think they were up to the mark? Yeah, I mean the applicant pool is very diverse. We get a lot of students from different backgrounds, so I think we were able to hit the mark. Okay, and do you think that this career fair ये जो organize किया गया है ये okay है, perfect है, या यहाँ पे आपको किसी चीज़ में कमी पेशी महसूस हुई है? Well, I don't see any loopholes over here since I'm a SZABIST alumni. I was very thrilled to participate in this career fair. And approximately around कितने students आप लोगों ने shortlist किए होंगे? I think somewhere around 300 to 400. Yeah. Okay, and majority उनमें से किस background की थी? IT department से थे, finance से थे या किस से थे? So I have shortlisted for one position, around 5 profiles. The position was for employer branding specialist from marketing side. Okay. So thank you so much. Best of luck to you. Thank you so much. Thank you. So viewers, हम मौजूद हैं BMA Capital के stall पे. आइए, we'll talk to their representatives. Assalamu alaikum. What are your names and which department do you belong from? My name is Shivani and I am from HR department. Of course, I am also from HR department. This is Shamala with you, manager HR. Okay, so ma'am, आपको students मिले, were they up to the mark जो आप ढूंढ रहे थे यहाँ पे SZABIST के student में? कोई इस तरह का student आपको आज मिला? Of course, हम finance graduates जो हैं हमारे पास recent vacancies announced हुई हैं. So we were looking for people who have like their experiences or their current academics related to finance. So we were able to find those candidates. Apart from that, sales के department में, marketing के department में भी हमारे पास openings होती हैं. उसके भी हमें candidates यहाँ पर I would like to add हम अभी MQs and internship programs भी offer करने वाले हैं. Definitely for all the domains. और उसमें भी हम आपके department तमाम स्टूडेंट्स को जरूर से वेलकम कर रहे हैं. So BMA Capital में IT डिपार्टमेंट मौजूद है. क्या आप उनके लिए इंटर्नीज या स्टूडेंट्स भी ढूंढ रहे हैं या इज इट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स? ऐसा हरगिज़ नहीं है. We are inshallah offering for all the departments. हमें हर जगह and it will definitely lead to permanent positions. So this is what I am guiding for the students also कि अभी जैसे कि हम एक asset हम ready करते हैं एक candidate को, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो. इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी उनको हम जॉब्स ऑफर करते हैं, बेनिफिट्स ऑफर करते हैं. Can you briefly explain or tell what is BMA Capital? BMA Capital is the pioneer brokerage house. We are a 30 years old company और हम we have a big name
इन टॉप 5 ब्रोकरेज हाउसेज। आपने यकीन आपको आइडिया होगा स्टॉक मार्केट का। हम बेसिकली वी आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी। How many students were shortlisted as approximately? बहुत सारे आए हैं, काफी सारे, लाइक आई गेस 20 to 25 people were there, जो मुझे लगे कि हाँ we can shortlist them for different departments and we can contact them. Okay, thank you so much and best of luck to you guys.